Hello, everyone. Today we have with us Mr. Amogh Tiwari as our guest speaker for the podcast series. Welcome to the podcast, sir. Please allow me to introduce you. Amogh Tiwari is the founder of Deefy. They are basically building a simple, fast, and safe way to take loans, rent, and mortgage your NFTs. And this is like a very different and fascinating idea. So, without further ado, let's start the podcast, sir. Sir, to start with, could you give a brief about yourself and what you have done in the past years? So yeah, I'm a college dropout, and this is my fourth venture. We have done multiple pivots. I'm a product designer by profession. Uh, Previously, we have built multiple SaaS-based products and scaled it up to more than 10,000 plus users. That was majorly around work, future of work. And prior to that, I had a small QSR chain based out of Lucknow. And DeFi is from multiple pivots. And yeah. Right, sir. So, let's start with very basic things. So for someone who doesn't know anything about NFTs, so how will you explain to them NFTs and what approach do you want them to take, like students or professionals, towards NFT and the future of it? That's a great question, and I was hoping you should ask this question. So, like, it's comfortable, right? English or Hindi both, or it should be in English Yeah, both. yeah, yeah. या सो बहुत सारे लोगों के साथ चीज़ ये है ना कि वो आर्ट को नहीं समझते हैं, राइट? अगर उनको आर्ट गैलरी में लेके जाओगे तो बोरिंग लगेगा. सो एनएफटीज फंडामेंटली आर मतलब टेक वाइज समझने से पहले हमें फिलोसफिकली समझना पड़ेगा कि मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट आर्ट. हर एनएफटी एंड आर्ट वर्क के पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है, एक डिजाइन के पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है, राइट? एंड आर्टिस्ट पहले से ही बहुत ज्यादा underprivileged, or you can say less recognized community है, highly paid नहीं है comparison to engineers and other design industry. So that is the way artists found out a way to represent themselves. It's a representation of their alter ego or anything that is worthy enough to put a profile picture, put that photo on a profile picture. Now the question comes, what if, why to call it an asset, why it isn't so valuable, and why do you have to pay, and why do you have to buy? मैं फोटो सेव करके भी स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के भी लगा सकता हूँ. So anyone who places this argument, there is a counter argument to that. ऐसे तो फिर मैं BMW के बाहर BMW के किसी आगे सेल्फी ले लूं और पोस्ट डाल दूं सोशल मीडिया पे कि माय लाइफ माय रूल्स. So that won't be logical, right? So we need to be very very practical and logical, understanding why it is called an asset, what is the tech behind it. So every asset holds utility. For example, your car holds utility, right? That's why you buy it. Your house holds utility. You can rent your house, you can live in that, and also you can do multiple other things provided by the banks. If there are no banks providing you services, what will you do? You cannot even sign a rent agreement. You're getting my point? You have to pay corporate tax. So there are various ways we utilize our assets in daily life. There are various kinds of asset. After COVID 2019, like yeah, the moment COVID started and there was a huge bust in work from home, that's where we realized that half of our time is digital, right? Almost morning 9 to 10, then half of the time we are in our phone, and we are either on Instagram or watching reels. So whatever, we are digitally involved, right? Most of the time we are digitally involved, and the digital involvement is so big that even your so technically you exist and you have to present yourself, you have to show off, right? In For example, I am putting this slide, right? So I'm showing off. So for me this is an asset, right? So for me this is an asset, and it holds utility, it holds value, right? Now since it is in physical form, I am enjoying its physical utilities. What if it was in digital form? And the utilities may sound like that this acting as a ticket to an conference or a ticket to a closed knitted seminar or webinar or anything, right? This is one of the utilities, right? So that's how digital assets, they hold value, and that's where the concept of NFTs comes in picture, right? So NFTs can be anything. They can be anything. They can be your land,
they can be your music, they can be your video, art, picture, anything that can be tokenized, anything that can be minted on blockchain and given a value, a sort of value. Now if you think how do you even give value, define value? So there are major factors. What is the thought process behind the asset or NFT? Or how, who has designed it, who has created it, what is the collection stands for? पहले तो philosophical वाली आएंगी, फिर उसके बाद टेक्निकल आएंगी कि अच्छा इसमें यूटिलिटी क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है, और इसका फ्लोर प्राइस क्या है, कि अच्छा जिस समय से बिकना स्टार्ट होगी उस समय इसकी क्या वैल्यू होगी। तो डिपेंड करता है कम्युनिटी की, क्या कितनी बड़ी कम्युनिटी है, किसी की 50,000 की कम्युनिटी है या 10,000 की कम्युनिटी। तो बहुत वेरियस वर्टिकल्स, जैसे अब आप वेब 2 में या मतलब रियल लाइफ में जमीन खरीदते हो, तो जमीन खरीदने से पहले आपको वहां का सर्किल रेट पता करना पड़ता है, राइट, कि ये कितने में है, इसका गवर्नमेंट रेट क्या है, फिर जो बेच रहा होता है वो उसके ऊपर अपना कमीशन लेता है, फिर अगर प्रॉपर्टी डीलर है तो वो अपना कमीशन लेगा, देन यू विल गेट द लैंड, राइट। एंड दैट कैन बी अ लैंड ऑफ 2000 स्क्वायर फीट और 20 मिलियन स्क्वायर फीट, बिकता ऐसे ही है, दैट्स अ प्रोसेस, राइट, unless and until it is black money if you're buying in a different way. So same way you buy assets and they hold utilities and value, and that's how you utilize them. We as DeFi, we add financial utility to those assets. Currently in NFTs दो ही चीजें आप कर सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो, राइट, फ्लिप कर सकते हो, बट किसी भी एसेट के लिए फाइनेंशियल यूटिलिटीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इट्स वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी एसेट। I would like So to yeah. stop you for to like get into firstly the NFTs first. So let's say sir, supposedly we are buying a stock. So before Hmm. buying a stock, we'll do some fundamental analysis or technical analysis. So sir, could you please repeat for the viewers and for us as well, like can you put into pointers, like what kind of analysis should we do before purchasing an NFT? What factors should we take into consideration before buying an NFT? मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, तो एक Mm-hmm. बंदा स्क्रीन शेयर करके यूट्यूब लाइव पे प्रोजेक्ट ओपन कर रखा था। तो जनरली यहाँ एनएफटीज वर्ल्ड में, मतलब वेब 3 वर्ल्ड में स्टार्टअप्स नहीं बोलते हैं, प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, मतलब यहाँ पे हर चीज को प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये थोड़ा लिंगोस बहुत है यहाँ पे, बहुत सारे लिंगोस मतलब हैं। तो तो वो प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर रहा था एंड वो डिटेल में प्रोजेक्ट को समझा रहा था, यहाँ तक ये भी समझा रहा था कि इस कलर कितना अच्छा यूज किया है, कलर की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि कलर आर्ट है ना वो, राइट, एंड कितने तरीके के ग्रेडियंट यूज किए हैं, क्या स्टैंड कर रहा है, राइट। कलर्स इफ यू रीड कलर साइकोलॉजी यू विल अंडरस्टैंड एवरी कलर हैज अ मीनिंग, राइट। सारे, फॉर एग्जांपल सारे बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज ब्लू कलर का लोगो रखती हैं। सो ये एक, this is one of the factors. For 2 3 major factors will be the size of the community, not only number but also the engagement, right. Engagement will be key thing. Who, how does the collection looks like, what is the popularity, Twitter engagement, right, and how many backers are there, are there any partners, what is collection standing for? I mean, Nike sold its shoes because they took a stand for something, right? By onboarding Michael B. Jordan and various other star NBA players. In each time, they would stand for something in sports, Motivation NBA, was their purpose. anything that can be anything. Intangible, that can be anything intangible. They never talked about their soul quality or their threading or the material. They more talked about who is wearing it and for what is the purpose, what do you achieve by wearing Nike, right. So these are the same things you look out in a project as well, from artwork point of view and from technical point of view, the engagement, price floor, and the community who has designed it, how big is the collection, and what are the utilities, key utilities. Now today I would say you should, like, don't buy an asset which is not having a financial utility. Why would you? Even though if it is expensive, it's fine, but you should not buy it. Why? Because tomorrow your asset is lying unused in your wallet, right? Wallet में पड़ी हुई है, आप 24 घंटे तो नहीं फोन पे खोल के बैठे हुए हो, right? So it's an asset.
now it should grow, it should multiply, it should bring passive income, or it should bring some money. कुछ तो पैसा लाए ना. मकान भी अगर खरीद के डाल दिया तो भाड़े पे किराए पे पैसा लेकर आता है, राइट? सो आप का डिजिटल एसेट अगर रेंटिंग के थ्रू किसी और के काम आ रहा है, उसकी यूटिलिटी कोई और एंजॉय कर ले रहा है, और शॉर्ट पीरियड के लिए आपको पैसे दे देता है. सो दैट्स एन मस्ट हैव यूटिलिटी, राइट? Very important. So that's missing from NFTs. That's what we are solving, and that's what the whole NFTs, how they work. Yeah, so basically like I didn't like know like आपके जैसे businesses हैं, ऐसे और भी businesses हैं पिक्चर में. तो इससे पहले मेरे को लगता था like मैं अपने डैड को इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा था एनएफटी का. वो कहते क्या है, तो बस एक स्पेक्युलेटिव एसेट है. इसकी वही जैसे ही आपने बताया कोई यूटिलिटी नहीं है जब तक आपके जैसे स्टार्टअप्स पहले नहीं आए थे या हमें नहीं पता था इस चीज के बारे में. तो इसमें जैसे जितना जितना लाइक और इनोवेशंस होंगी स्पेस में, उतना उतना द मोर पीपल विल अडॉप्ट द यूसेज ऑफ एनएफटीज, राइट? I will do paid. Yeah. Yeah. So same here. I would also understand this. I also started with this question. मैं स्क्रीनशॉट लगा लूंगा, बट ऐसा नहीं है उसका. अब मकान की रजिस्ट्री कराते हो तो आपके नाम पे जमीन चढ़ती है कि नहीं? यस कल को सर. जाकर के रजिस्ट्री नंबर पे पता नहीं लगाया जा सकता ये मकान कितने की रजिस्ट्री हुई थी, किसने खरीदा था, किसके नाम था, किसके नाम से रजिस्ट्री हुई थी, राइट? सो अच्छा, वो किसके नाम से रजिस्ट्री हुई थी ना, ब्लॉकचेन ऐसे ही काम कर रहा है. प्रूफ देता है आपको कि आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको प्रूफ दे रहा है कि हाँ भाई इस वॉलेट एड्रेस पे ये चीजें हुई हैं, राइट? एंड उसके वैलिडेटर्स हैं, बहुत सारे वैलिडेटर्स उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं, राइट? अब वो 100 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उसी में टाइम लगता है, राइट? अब आप कहते हो कि यार बहुत टाइम लग रहा है, 100 रुपए के बदले में 100 रुपए चाहिए जल्दी से, राइट? फॉर एग्जाम्पल यूएस डॉलर के बदले में आईएनआर चाहिए जल्दी से, यूएसडीटी के बदले में, स्टेबल कॉइन के बदले में. तो आप अब आपको दिख रहा है 120 वैलिडेटर्स हैं, राइट? थोड़ा टाइम ले रहा है. या फिर गैस फीस, तो वहां पे यू पे गैस फीस टू फास्ट टू स्पीड अप योर ट्रांजैक्शन, राइट? सो टैक्स नहीं है ये टैक्स के अलग तरीके से, टैक्स तो भारत सरकार ले रही है. राइट. तो एंड आपको लाइक व्हाट डू यू फील, और क्या 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 इनोवेशंस हो सकती हैं इस फील्ड में एनएफटीज की स्पेस में? लाइक यू आर ऑलरेडी परसुइंग अ स्टार्टअप व्हिच लाइक मोनेटाइजेस द होल्डिंग ऑफ योर एनएफटीज. So what do you think are the are other potential disruptors in this um, space of NFT? Gaming is one of the biggest use case Gaming. for So from could you please elaborate how gaming? गेमिंग स्किन्स. अच्छा, आपको स्किन लेनी है, आपने देखा रेंट हो रखी है, उस एसेट की वैल्यू $500 है, पर $10 में एक हफ्ते के लिए मिल जाएगी खेलने के लिए गेम, राइट? सो व्हाई वुड यू बाय इट? Right. Yeah, so NFT based gaming marketplaces or gaming games, NFT based games are one of the biggest industry now. I mean, they are even bigger than mobile phone and even cars. They currently are now bigger than e-commerce, food, healthcare, anything. You pick anything. And the industry is rapidly growing. There is a huge investment happened in 2021, and yeah, so Animoca Brands is one of the examples. Animoca Brands in Web3. That was a startup, came from a pivot. It was not working out. Then they pivoted into a partnership or and the growth skyrocketed. Now they are almost on every Web3 project, which is doing good. So already you talked about NFTs, we link it with blockchain. So क्या ये centralized setup में नहीं हो सकता, इसके लिए एक decentralized setup जरूरी है? बहुत बढ़िया सवाल है ये. अगर आप जिम जाते हो, मैं जिम का सारा सामान आपके छत पे लगा देता हूँ. हाँ, उसको आप जिम बोलोगे? नहीं बोलोगे, राइट? आप बोलोगे जो चीज जहां करने की जगह है वैसी है. इस सेम फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ ब्लॉकचेन की फिलोसफी ही यही है, डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? डिसेंट्रलाइज्ड वे में ऑपरेट करना है, डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करना है, यानी कि यूजर डेटा सिक्योर है, ट्रांजैक्शन सिक्योर है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं इतना. बट आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द मोस्ट innovative technology like we are experiencing right now.
So if you do on like centralization बिल्कुल कर सकते हैं, and but somewhere down the line it's, again, for me it's philosophical. I feel we always want, we have went to Mars, we have like we have done so much space exploration, and as human race, scientists and researchers, we always wanted to create a parallel world, right? We have been showing that in our movies from Star Wars to whatnot, right? And these things are not joke. ये नहीं कि कोई ऐसे ही बोले दे रहा है, बताए दे रहा है, पिक्चरें बन जा रही हैं जिन पे billions and billions of dollars, iconic movies. So these things are not joke. That's human imagination, how we perceive our next 20, 30 years, or maybe in future. So we are unable to create technically. Still, we are very far fetched from creating a real parallel world. So we imagine that in metaverse, right? So that's the whole theory behind Web3 and meta, especially metaverse, right? And it's more than that. I may not have clearly understood myself. So it's more than that, but this much I have understood so far. And so, sir, do you think like we are in some sort of a bubble in terms of digital assets? Like No, there was. not at all. Not at all. It's not bubble. Uh, See, a company like Facebook, if they are changing their name, they're not stupid, right? They have this clear understanding to identify. They have enough money, researchers, resources to do research that it is bubble or not, right? OpenSea last month did 3.2 billion dollars of transactions uh, in like buying and selling of NFTs, right? So, nahin, When I didn't mean the whole digital asset or the whole crypto industry is in the bubble. Like, let's go back to like 2001. So there was a dot-com bubble at that time. There were many internet companies formed, but many of them didn't make it through for 5 years in the future. So, like there are many crypto companies being incorporated. नए नए NFT प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो हर चीज की कोई यूटिलिटी वैल्यू नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में जाके इसमें से मेजोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे या फिर डिसअपियर हो जाएंगे? ये बस अभी ये इस टाइम पे। वो तो अभी भी होता है, वो तो जनरल स्टार्टअप्स के साथ होता है। वो तो एक मतलब दैट इज सो ऑब्वियस। आई मीन, आप अपनी परचून की दुकान पे ना काम करो, मेहनत करो, ना सामान लेकर के आओ जो कस्टमर मांग रहा है, बंद हो जाएगी एक हफ्ते बाद, एक महीने बहुत ज्यादा। या फिर कहीं किराया लेके ओपन किया तो वो भी बंद हो जाएगा, राइट? सो मेरे खुद के स्टोर्स बंद हुए हैं। अब मैंने नहीं दिया टाइम पे किराया, नहीं है रेवेन्यू, नहीं, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो बंद कर दिया। सेम हैपेंस विद प्रोजेक्ट्स एंड स्टार्टअप्स एज वेल। अलाइन नहीं है, मल्टीपल पिवट्स आप कर रहे हो, स्केल नहीं कर पा रहे हो, ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो आइडिया से प्यार थोड़ी करना चाहिए। बंद करो उसे, मूव ऑन करो, नई नया प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो वो तो चलता रहेगा। वो तो कितने कॉइन्स डेली निकलते हैं, राइट? सर मैं जो लाइक किराना की शॉप खोलना कूल नहीं है, क्रिप्टो इंडस्ट्री एंड NFTs ये सब कूल है। इस वजह से नहीं जैसे बहुत सारे, हाँ? इस वजह से आ, लाइक बहुत सारे एंट्रेंट्स आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, न्यू एंट्रेंट्स हैं इस इंडस्ट्री में। तो ये आगे आते आते क्या ये नंबर सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा जो नहीं यार, ये तो कि। अभी और बढ़ेगा। इट्स वेरी अर्ली। अच्छा। It's very early. It's very early. We are only seeing very handful of projects. If you feel we have seen all, no, we have not. So just see fintech companies in of the world. There are more than 450 logos on a single picture, and more fintech companies are opening in different regions, maybe in Latam region and Indonesia and various other countries. So fintech is still growing, right, in their own category and product. And Web3 is just started, right? And we are very early. So 4 years, 2 to 3 years, it's straight growth. No, nothing going down, right? Because there are no enablers, right? Projects बहुत है, enablers नहीं है। वेब NFT बेचने वाले बहुत है, बनाने वाले बहुत है, खरीदने वाले कम है, क्योंकि राइट पैसे ज्यादा है, राइट? राइट। Right. Right, sir. So let's now move to your journey a little bit. So आपने कहा आप कॉलेज ड्रॉप आउट थे, तो तब जब आपने ड्रॉप तब आपके हाथ में कुछ था या रिस्क देने का क्या पॉइंट था? आपकी मतलब ऐसा जर्नी कैसी रही है? my journey has been a roller coaster, or I would say a roller which is only low. It never goes high.
So see, if you have to be very honest with yourself what you want to do, you know. So I'm a designer by profession, and I like to do creative work. And if it is happening by solving a problem and जिससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, right? But the basic, like I come from a tier 2 city, so I understand things from first principle perspective. कि simple जो as it is जो चीज है वो just accept it like that, right? So for me, it was and for my team also, it has been a good journey. We have seen multiple pivots, and today we feel confident enough to build MVPs, launch products in 15 days, 20 days. So uh, we understand value of speed. My journey with all these things have been, I don't understand tech, right? So I'm a non-technical founder. So for me, it is also not very like, it's very biased, right? It's biasness. A non-technical founder cannot build a hardcore deep tech company. It's biasness. I feel it's not. It's there is no such thing like that. You can do that or you cannot do that. It's if you want to do राइट। it, you can. गली की हम मेरे कॉलेज में भी जो सीनियर्स थे काफी सारे जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे थे, तो उन्होंने मतलब छोड़ दिया कि प्लेसमेंट ले लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। मोस्टली लोग या तो कुछ देखते हैं कि हाथ में अभी क्या है, तो मतलब वो रिस्क लेने के लिए आप क्या एडवाइस दोगे? तो बहुत छोटी सी कहानी बताता हूँ, इंटरेस्टिंग लगेगी काफी। सो एक विशाल नाम का लड़का था, तो उससे वो आके बोलता है कि उससे पूछा व्हाट इज योर प्रोफेशन, पैशन। तो उससे बोला माय पैशन इज ट्रैवलिंग। एंड फिर उससे पूछा हाउ मेनी प्लेसेस यू हैव ट्रैवल्ड। तो बोला मैं ट्रैवल किया नहीं हूँ, बट मैं ट्रैवल कंपनी में काम करता हूँ, जहाँ पे मैं पूरे दिन ट्रैवल डेस्टिनेशंस देख करके अपने यूजर्स को बताता हूँ। एंड इससे मैं अपने नए लोकेशंस के बारे में भी जान लेता हूँ, और ये वो, एंड वीकेंड्स पे कहीं चला जाता हूँ घूमने। बट ट्रैवल नहीं किया एक्चुअली, रियल ट्रैवलिंग जो लाइक द वे यू ट्रैवल, राइट? एटलीस्ट 5-6 कंट्रीज ऑन अ स्ट्रेट गो। एंड दैट्स हाउ आई मेक माय पैशन इनटू प्रोफेशन। सो ये भी एक तरीका है to do things. And in startups generally, if you don't know anything, you have to give time, right? If you come up with a mindset that you know what you are doing, that you can build a business or you can build a company, it's a just cup of cake, it requires nothing. And if you're not humble enough to ask, and be shamefully ask, right? अगर हेल्प चाहिए, कोई चीज चाहिए, तो फिर लग गए पीछे कि नहीं भाई कर दो, अब जाने नहीं दूंगा ऐसे, राइट? सो ये जो इस तरीके की परसिस्टेंस वाली चीजें होती है ना नॉर्मल लाइफ में, अगर ये नहीं है पहले से तो बिल्ड कर लो, अगर नहीं बिल्ड हो पा रही हो तो फिर सही डिसीजन है, मत करो स्टार्टअप, है ना? क्योंकि राइट। वो आपको चाहिए होता है, मतलब इतना फैंसी नहीं है कि अब बैठे हैं, संडे को भी काम कर रहे हैं, सैटरडे को भी काम कर रहे हैं। 6 महीने करोगे, 1 साल करोगे, 1.5 साल करोगे, उसके बाद 4-4, 5-5 साल कैसे सेम माइंडसेट के साथ। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत पैसे आ रहे हैं, जा बहुत रहे हैं, राइट? सो एंड इट इज डिफरेंट जर्नी फॉर एवरीवन, इट डिपेंड्स। राइट सर। सो एक क्वेश्चन था, आप वाई कॉम्बिनेटर से कैसे रिलेटेड हो? So I'm actively on part of Y Combinator's startup school, and work with multiple startups on early stage. So yeah, I we have applied for YC. वहाँ से कुछ so we are also hoping to get there. So but parallelly we have been doing that this as well. So there are like being part of Hacker News, actively doing YC startup school sprints, and also then doing co-founder matchmaking. So that's how you complete too many course, right? It is good. Sprint की तरीके से होता है, right? So it's good enough, and that gives you a small certification of completing your startup school of YC and other things. So it's just ऐसे ही यार, अब YC का वो होता है ना, तो you know how Indians are, right? जरूरी नहीं है दिखाना कुछ भी, बट आदमी लोगो लगा देता है कि अरे यार ठीक है, खाली नहीं पड़ा होना चाहिए, राइट? राइट करता सर। तो like there are many people who do a lot of things, but they never show, right? They have good achievements, good certificates, they are doing different on different areas of life.
How many people Right. must be great singers and guitarists? We don't know, right? They never show it. Right, sir. Yeah. So that's all from my side. Anything from your side? Yeah, sir. Not. And No. सर मैं लाइक बड़ा क्यूरियस, मेरे को आपकी जर्नी बहुत अच्छी लगी कि आपने पहले डिजाइनिंग में वो किया। आप क्या अपना वो फ्रेम ऑफ माइंड से लेके जा सकते हैं कि आपने पिवट करने में आपके दिमाग में आया क्या उस टाइम पे? लाइक अभी भी हम जैसे वी आर परसुइंग, बोथ सिद्दक एंड मी, हम दोनों वी आर परसुइंग अ कोर्स इन फाइनेंस। हम सोचते हैं स्टार्टअप भी देख ले, हम सोचते हैं कभी इन्वेस्टमेंट्स में चले जाएं, हम सोचते हैं कभी और कोई और इंडस्ट्री एक्सप्लोर कर लें। तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम पीछे से जो हमारी रूट्स हैं वो फाइनेंस की हैं या बिजनेस, मतलब बिजनेस मेजर्स की हैं। तो फिर आप एक निफ्ट से पढ़े, आपने डिजाइनिंग के आपके वो था, बैकग्राउंड था। तो फिर उसके बाद आप आगे जाके आपने मतलब आपको वो कॉन्फिडेंस या फिर वो पिवट करने का वो कैसे आया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ? मतलब और कुछ आता भी नहीं है ना। नहीं इसके अलावा तो सर, ऐसी और बात नहीं है सर, आप निफ्ट से पढ़े हैं सर, तो फिर कुछ नहीं क्या? नहीं नहीं, मेरे को बहुत टाइम लग गया था यार। मेरे को 20-30 हज़ार रुपए की नौकरी मिलने में तूफान हो गया था। आफ्टर लिविंग कॉलेज एवरीवन यूज्ड टू आस्क भाई आप कहाँ से पढ़े, बिकॉज इन डिजाइन यू हैव टू शो लॉट, राइट? एंड फ्यू कंपनीज हैव दैट स्ट्रिक्ट थिंग कि निप से हो तभी आपको एंट्री मिलेगी, ऐसा भी है, राइट? सो so I had problems in getting jobs and well and everything, but you have to do something to make side hustle, right? So 10, 15, 20,000 rupees to, according to living in a tier 1 city of India, you have to manage. And plus my family is super supportive, so they never asked कि घर का खर्चा चलाओ ये वो, general parents, Indian parents, right? So that was not the case. Even though I come from a very humble family, my father is a truck driver, and for me taking risks have been a challenge. मतलब वो आपको देखना भी पड़ता है ना कि आप कहाँ, किस जगह से आ रहे हो, का क्या आपके लिए सारी रिस्क लेने वाली चीजें सही हैं, क्या आपको नौकरी कर लेना चाहिए। तो जो लोग वो छोड़ देते हैं ना, जिनकी आप बात कर रहे थे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वी कैन नॉट जज देम, राइट? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, राइट? इट्स नॉट ऑलवेज एवरीथिंग इज विजिबल ऑन लिंक्डइन, राइट? लिंक्डइन पे इज टू मच ज्ञान, राइट? बट रियलिटीज आर डिफरेंट. Right. So just a follow-up last question. Any learning that you want to give to our viewers? I don't have anything, bro. मतलब what you can, अब कोई कोट नहीं याद आ रहा है। मतलब गूगल कर सकते हैं, लाइफ लर्निंग्स तो बहुत सारी हैं, गूगल पे मिल जाएंगी। बट फॉर मी इट हैज बीन always punch above the weight, and when you say risk taking, so understand what is risk taking. 50-50% कोई risk नहीं होता है, and if you know the outcome, then it is not risk, it's an educated guess. So what is risk, ये समझना जरूरी है, where you don't know what is happening. It will, once it's done, it will happen. So everything is seems impossible until it's done. You do it, it's possible. Great, Right. sir. Thank you so much, Yeah. sir. It was an insightful session. Yes, sir. Yeah, So, thanks. Glad to be here. Okay, yeah. bye Thank you, bye. sir. Sir, I wish you all the success in life. Yeah, thank you, thanks man, thanks.